The boots are put on, the gloves are rolled on, and the helmets are secured. The riders have loved the trail and its unfolding adventures till now. They are looking forward to ride deeper into the heart of Jaisalmer today. We see a few local villagers who have gathered outside the boundary of the resort. They had their Sindhi breed horses which they wanted to proudly showcase to us. For us, it was an unexpected opportunity to meet the people and the Sindhi horses who truly belonged to this place. मेरा नाम उमेद सिंह, ये मेरा घोड़ा है 8 साल का, इसका नाम बस। ठीक है, ठीक है। और ये इसको ये नीचे बन, ये मूछी है, ये सिरबाग है, ये लगाम है, ठीक है। ये बाग है, ये तरसाड़ा। अच्छा, ठीक है। और बाबू पीछे, इसको बोलते हैं बिथड़िया, ये डली, अच्छा, ये भागड़ा, और ये इसको बोलते दुमची। दुमची, हाँ। दुमची बस ऐसी हवा में उड़ती है, जैसे घोड़ा चलता है ऐसे ऊपर आती है, जैसे इसका पोशाक। कहाँ से बनता है ये? हमारे इधर दर्जी बना देता है। दर्जी बना देता है? हाँ। चमड़ा किस चीज का? चमड़ा है इधर मेघवाल कास्ट के वो बनाते हैं चमड़े की। नहीं, किस चीज? गाय का, भैंस का? पाडे की खाल का, पाडे की खाल का। अच्छा, बफेलो तक चलता है ये तो 5-10 साल चलता है, लगातार चलाए तो। अरे सुल्ला जी, ये उमेश सिंह जी का घोड़ा है, बुलेट। नाम इसका बुलेट है। नाम इसका बुलेट है और सिंधी घोड़ा है, राइट? सिंधी। अच्छा, पाकिस्तानी नस्ल का। पाकिस्तानी नस्ल का, बढ़िया बात है। बड़े तो उमेश सिंह जी, ये आपका ट्रेडिशन है, आपका कल्चर है, इस चीज़ को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा बात है। आजकल के इस ज़माने में घोड़े रखने वाले बहुत कम हो गए हैं। हाँ। तो आपका तो डेजर्ट फेस्टिवल के टाइम पे रेसेस वगैरह भी है, तो हमारी टीम पूरी देखने आएगी आपको। ठीक है, जरूर। कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, आप बुरा मत मानिए। नहीं। क्योंकि ये तो एजुकेशन के हाँ, हिसाब से है। सबसे पहले इसका जो ये कांटा बिट है, हाँ, इसको आप लोग अगर ना यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि घोड़े के मुंह में लगता बहुत है। आपके हिसाब से ट्रेनिंग के टाइम में आप इनको यूज़ करते हैं, बाद निकलते नहीं निकलती हाथों हाथ। हाँ, तो अभी नहीं निकालेंगे। तो ये जो है ना, इसको अगर ट्रेनिंग के टाइम पे भी आप लोग ट्राई करें कि सिंपल बिट से हम ट्रेन करें, तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ, तो क्या है, फिर कांटा बिट का धीरे धीरे चलन ख़त्म हो जाएगा। हाँ। ये तकलीफ है, ये जैसे अपने मुंह में अगर हम ब्रश करते हैं ना, सुबह सुबह दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो अगर कांटों से ब्रश करें तो कितना लगेगा हमको, उस तरीके से। और दूसरा, इसका उम्र जो है वो 18 महीने का। तो 18 महीने में आप लोग राइड करते हैं, और ये चले आ रहा है पीढ़ियों से पीढ़ियों। लेकिन क्या होता है, घोड़े का जो पूरा जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है ना, उसको डेवलप होने में कम से कम 3.5 साल लगते हैं। 3.5 साल लगते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो जाए, उसके बाद में हम उसको राइड करें, ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, रस्सी से ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर माउंट करते हैं, चढ़ते हैं 3.5 साल बाद, तो क्या हड्डियाँ सब मजबूत रहती है। फिर 3.5 साल बाद चढ़ते हैं। हाँ, फिर उतनी चलता नहीं जितने छोटा चलता है ना। हाँ। उदंत बच्चों की रेस होती है, अभी उदंत बच्चा। हाँ। उदंत की रेस होती है, दो दांत की रेस होती है, और फिर वो बड़े घोड़े में उसकी रात वो 40 की स्पीड का है। तो फिर हम एक काम ये कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज बड़े बड़े जगहों में जो रेसिंग होती है, उसमें भी तो घोड़े 2-2.5 साल के ही रहते हैं, लेकिन उस पे राइडर्स बहुत हल्के होते हैं। नहीं, तो आपके जो छोटे राइडर्स नहीं, उनको ये मतलब बताने वाला चीज़ है कि अगर हल्के राइडर इनको राइड करें तो। ये बच्चा बैठा नहीं, ये राइडर है। अच्छा, ये राइडर। हाँ, ये देखिए हल्के। बच्चे को बैठो, अभी घुमा के लाएगा। एक सेकंड ललित सर, तो एक ऑटो गाड़ी, ये थी ऑटो गाड़ी, और खबर ऑटो गाड़ी पास हुआ। As modern day equestrians, we have exposure to a lot of current and evolving best practices. In our world as equestrians, we are used to both receiving and giving criticism. Opinions float free. It is very unlike the people we have met here, though. However, we did take the opportunity to share a few thoughts on housekeeping and some of the acceptable practices, being very conscious of where to draw the line, making sure that this was never about teaching or preaching. All we wanted to do was to simply share a little knowledge, exchange experiences, and hopefully leaving behind something useful,
while also remaining open to learning from them. And finally, after that wonderful and unexpected interaction with the locals, it was time to get going. One by one, the riders mounted their horses, and we slowly made our way through the resort. How's he feeling today? Good. Very good. Right and circle. As we rode out, there were smiles, waves, and warm farewells to the staff who had looked after us so wonderfully. It was time to say goodbye and begin another day in the saddle. Soon, our quiet ride gave way to yet another delightful surprise. We came out onto a vast, open, barren expanse of land where the same group of villagers we had met earlier were waiting for us. And this time, they had been joined by another horseman riding a beautiful chestnut. Inquisitively, Deepthi started the conversation. राम 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 राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य सिंह। अच्छा, और घोड़े का? घोड़े का नाम रॉयल। अच्छा, रॉयल घोड़ा पाकिस्तानी नस्ल का है। अच्छा, तो उसकी क्या खासियत होती है? ये चलने में तेज रहता है। अच्छा अच्छा, और कितने इसका साल? ये दिमाग का तकड़ा रहता है, जो चीज सीखता है तो वो बाद में भूलता नहीं। कितने दिन में सीखता है? ये लगभग 5-10 दिन में सीख जाता है। अच्छा, कोई भी चीज सिखाओ? कोई भी सिखाओ। अच्छा, और ये कितने साल का है? ये 3.5 साल का है। 3.5 साल का। अच्छा, उनको क्या खाने में क्या देते हो आप? ये चने की दाल हाँ। और बाजरा। अच्छा, गाय का घी। अच्छा, घी भी? घी, मक्खन। अच्छा, और फिर रेस में उतारते हो? हाँ, रेस में उतारते हैं ना। तो क्या टाइप की रेस होती है यहाँ पे? ये रेवाल चाल की। अच्छा, रेवाल चाल। ओके। और आपका घोड़ा? ये बुलेट। अच्छा, इसकी क्या उम्र है? 18 महीना। 18 महीना, ओके। आप इस बार जो अभी डेजर्ट फेस्टिवल में हो रहा है रेस, उसमें ये जाएगा? जाएगा। आप भी रहेंगे वहाँ? हाँ, रहेंगे। हम टीम के साथ में देखने आएंगे। जी जी। आपका साफा बहुत सुंदर है। साफा तो हमारा राजस्थानी यही साफा है, पहचान है राजस्थान की। राजस्थान की पहचान है। और मूछ भी वो पहचान की। मूछ छोटा कैसे रह गया? क्योंकि डेजर्ट फेस्टिवल में तो बड़े बड़े मूछ रखते हैं। अरे वो दाढ़ी साथ में रखते हैं। वो दाढ़ी साथ में रखते हैं। ये खाली अकेला ही मूछ रखते हैं। अच्छा, इस घोड़े का उम्र क्या है? ये 3.5 साल का बंदा। 3.5 साल का। और आप लोग बचपन से ही घोड़ा चलाते हैं? हाँ, बच्चे। ये तीनों जो घोड़े हैं, ये सब पाकिस्तानी नस्ल के? हाँ, पाकिस्तानी। और सिंधी है? सिंधी देवर। तो इस एक फ्रेम में देखिए, मारवाड़ी घोड़ा भी है जिसमें गिरिराज और दीप्ति है, और सिंधी घोड़े भी है जहाँ ये हमारे गांव के मेहमान हैं। मेहमान तो हम हैं, गाँव के मेज़बान हैं। और ये काठियावाड़ी घोड़ा है जो गुजरात का है ना? हाँ। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा? ओपन रण में। And then came the challenge. Umed Singh invited Giriraj to a spontaneous gallop race. And of course, Giriraj wasn't going to say no. For the first round, the horses were ridden gaited that our local horsemen were accustomed to. And for the second, they switched to a canter, the pace our riders were more comfortable with. Different horses, different riding styles, different strengths. Yet, there were no winner or loser here. The only winner was our mutual smiles, handshakes, and good nature camaraderie. And then came another fascinating demonstration. Umed Singh showcased the distinctive gait of the Sindhi horse traveling alongside our support vehicle. The pace here looked like close to 20 kilometers an hour.
The horse was covering the ground effortlessly, while Umaid Singh appeared almost completely still in the saddle. That smooth, comfortable movement gave us a glimpse into why these horses and their gait have been so well suited to traveling long distances across these vast barren landscapes. As we rode on, we kept thinking about our interactions with these horsemen. It's always easy to arrive somewhere, see things done differently, and assume that your way is the right way. But we seldom know the circumstances, the traditions, the resources, or beliefs that have shaped the way people care for their horses around the world. And so in this place as well. And honestly, it was a wonderful feeling. For a few moments, we weren't tourists passing through the desert. We were simply a group of horsemen meeting other horsemen, sharing a common language that needed very few words. As we continued along the trail, another little surprise greeted us. We came across two free-roaming Sindhi horses who seemed to have took an interest in us. Perhaps we looked rather unfamiliar and strange to them. They curiously walked up to us, came remarkably close, stood there for a while, almost as if they were admiring the strange procession that had appeared in their territory from nowhere. And then, as if they knew exactly where their boundaries lay, they slowed down, watching us disappear in the distance. As the two beautiful desert horses returned to their world, we continued on our trail. We were now riding on a stretch of paved road. The firm surface gave the horses a little more freedom to open their stride, allowing us to pick up the pace and cover more ground in less time. And as we reached the end of the paved road, another landmark began to emerge on the horizon. In front of us, standing against the stark landscape of the desert, was the Khaba Fort, its weathered walls rising in the distance, almost blending into the colors of the land around it. We came across another familiar sight from Rajasthan, a snake charmer sitting quietly outside the fort waiting for the tourists. Times have changed. With growing awareness around wildlife conservation and animal welfare, the traditional practices of using live snakes for performances is no longer practiced here. While we explored the old quarters of Khaba Fort, the horses were given well-deserved break and their good feed. In the meantime, we learned that the next stretch was extremely rocky and uneven, and we felt it would be unfair to put the horses through terrain that could cause unnecessary strain or injury to them. So, rather than ride, the horses were carefully loaded onto the support truck, and we set off by road towards our next stop for the day. Sometimes, being a responsible rider means knowing when not to ride. And on this trail, the welfare of our horses always comes first. While the horses were being driven ahead to our next stop, we riders took the opportunity to explore the terrain a bit more on foot. What initially looked like just another stretch of barren, rocky land
turned out to be a fascinating geological landscape. As we walked amongst the rock formations here, there were remarkable signs of the forces that had shaped this region over geological time. We were seeing formations suggesting ancient glacial movement, volcanic activity, and evidence of landscapes that may have once been beneath the sea. It was quite extraordinary to see these stories written into the rocks themselves. The ground around reminded us that Jaisalmer's story goes far beyond its forts, villages, and horses. Our stop for the night was a simple farm stay. Freshly cooked food, simple surroundings, and the warm glow of the dim light, there was something incredibly soothing about it. And with tired bodies, full hearts, and another day of unforgettable memories, we finally called it a night.